Hello and welcome to another lesson on habitat. Habitat के ऊपर और एक लेसन में आपका स्वागत है। आज हम aquatic habitat के बारे में कुछ जानेंगे. Today we will learn something new about aquatic habitat. I want to inform you about fresh water, percentage of fresh water on the earth, what are the various sources of fresh water, and one small example of a freshwater body, that is pond, and some of the famous freshwater bodies of the world. आज के क्लास में हम जानेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि फ्रेश वाटर क्या है, धरती पर फ्रेश वाटर का परसेंटेज कितना है, फ्रेश वाटर के अलग अलग सोर्सेस कौन से हैं, और एक छोटा सा सोर्स पॉन्ड और उसमें रहने वाले प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, और इस वर्ल्ड में कौन से फेमस फ्रेश वाटर बॉडीज हैं. और इस लेसन के बाद आपको भी ये ध्यान रखना होगा कि आप ये समझ पाएं कि फ्रेश वाटर क्या है, फिर दूसरे को समझा भी पाएं, कितना परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर अर्थ में प्रेजेंट है ये भी बता सकें, वेरियस सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर को आप लिस्ट बनाकर लिख सकें, साथ में फ्रेश वाटर बॉडीज में कैसे लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स एक साथ रहते हैं उसके बारे में बता सके, और फिर मैप में फेमस फ्रेश वाटर बॉडीज को लोकेट कर सके. So, what is fresh water? अगर हम एकदम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, then we say that fresh water is that water which is not salty. Now, if you look at the data shown here in the image, you can see in the first bar, there is a distribution of global water, or total global water. Around 96.5% of the total global water is present in oceans. Around 0.9% is present as other saline water other than the oceans. And around 2.5% of total global water is fresh water. धरती में जितना भी पानी है उसमें से सिर्फ 2.5% फ्रेश वाटर है. अब हम देखेंगे कि ये फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है. आउट ऑफ 2.5% ऑफ टोटल ग्लोबल वाटर फ्रेश वाटर, इसमें से ये फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है. आप सेकेंड बार में अब देखिए, ये सेकेंड बार, ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर. The water present in groundwater, glaciers and ice caps and surface water constitute the fresh water. अब ये surface water भी कहाँ कहाँ present है? ये present है lakes में, ground ice में, permafrost में, atmosphere में as humidity, rivers में present है, swamps, marshes और soil के moisture में भी present है. So when we look at the image here, which shows the distribution of total global water, we find that 96.5% of total water is present in oceans, then 0.9% is present in other places as saline water, and around 2.5% is of fresh water. Out of 2.5% of fresh water, around 68.7% of fresh water is present in glaciers and ice caps, 30.1% is present in groundwater, and around 1.2% is present in surface water, present as surface water. Then out of this 1.2% of surface water, around 69% is found in the form of ground ice and permafrost. 20.9% is found in the lakes, around 3% as humidity in the atmosphere, around 0.49% as fresh water in rivers,
2.6% in swamps and marshes, and 3.8% in soil moisture, and a very small amount, 0.26%, in living things. So this is the distribution of total global water and fresh water. And here we are paying more attention to the fresh water because we are going to discuss about the freshwater habitat. Now, we are learning about freshwater habitat by taking a small example of a very small freshwater habitat called pond. Ponds can be formed naturally and also can be constructed by human beings. So there are natural ponds, there are artificial ponds. This image shows the structure of a typical pond and how the level of the depth goes on increasing. If we pay attention to this picture, we find that in the shore of the pond, we have shoreland plants. Then as we go a little down, we find emergent plants, means the plants whose roots are present in the soil and their stalk and their leaves are above the water. Then we have floating plants. For example, look at the smaller plants shown in the image. The plants which are floating on the water. Then we have some plants, aquatic plants, which are completely submerged in water. मतलब वो पानी से ऊपर कभी दिखाई नहीं देते. ये submerged plants पानी के अंदर ही रहते हैं. This is the structure of a small pond. साथ में हम क्या देखते हैं? That plants are living things. Then inside the pond we have animals. These plants are present on the soil. So plants, animals, microorganisms, these are living things present in the pond. And at the same time, we have water, temperature of water, the soil, right? These are all non-living things. But non-living things and the living things, they are living together and interacting with each other. This is called as the interaction between living and non-living things. And there is a single word that we use to explain such interaction between living and non-living things, and that is ecosystem. So in the image, we have shown the pond ecosystem. Okay. So what is a pond? A pond or a lake ecosystem includes biotic plants, means living plants, animals and microorganisms, as well as abiotic, means non-living physical and chemical interactions. Just now what I have explained to you. So this is a freshwater pond. It has plants, it has animals, right? It has its own ecosystem. The living and non-living things interact with each other and they live together. This is also another example of a pond ecosystem, and I have shown you specific animals and plants which are present here. अब जैसे देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं इमर्जेंट प्लांट है. ये देखिए लोटस का, इसके रूट्स सॉइल में है, लेकिन इसके लीव्स और फ्लावर ऊपर पानी के सतह पर हैं, राइट? इमर्जेंट प्लांट. वहीं पर वाटर हैसिंथ देखिए और डकवीट को देखिए, इसके रूट्स क्या है? पानी में ही है, ये सॉइल में नहीं जुड़े हुए हैं, और इसके जो लीव्स हैं वो पानी के ऊपर हैं, तो ये फ्लोट कर रहे हैं पानी में. दिस आर फ्लोटिंग प्लांट्स. पर यहाँ अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे, जैसे इलोडिया प्लांट है, इसके रूट्स सॉइल में है, लेकिन इसके ब्रांचेस वाटर के ऊपर नहीं जा रहा है. दिस प्लांट इज कंप्लीटली इनसाइड द वाटर एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सबमर्ज्ड प्लांट. उसी तरह अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में बात करी थी एनिमल्स और प्लांट्स की इंटरैक्शन की. तो यहाँ एनिमल्स कौन है? यहाँ पर फिश हैं, राइट? श्रिम्प्स हैं, टैडपोल्स हैं, मॉस्किटो के लार्वा हैं. देन वी हैव plants like duckweed, lotus, water hyacinth and elodea. Okay, and we have soil here. Then we have grasses. So we have aquatic plants as well as aquatic animals interacting with non-living things like water and soil,
and temperature of the water. This interaction is called as ecosystem, and this is a small example of pond ecosystem. Now, as I have mentioned in the objective that we'll be learning about types of freshwater habitat. So we have different types of freshwater aquatic habitat, for example, rivers, creeks, lakes, ponds, and streams. Then we have wetlands like swamps, which have woody plants and trees, and marshes which have no trees but lots of grasses and reeds. Okay, these are the examples of freshwater aquatic habitat. Then there are many freshwater animals and plants. We discussed about some of the animals present in a pond. Other examples are like snails, worms, turtles, frogs, marsh birds, mollusks, alligators, beavers, otters, snakes, etc. Then we also have very interesting animals such as river dolphin, the diving bell spider. These are some of the freshwater creatures. You must have heard about Gangetic dolphin found in River Ganga. Then we have plants such as algae, cattails, water lilies, and aspen, etc. These are some of the examples of freshwater animals and plants. Then let us know about famous freshwater habitats of the world. कुछ हमारे दुनिया के कुछ बहुत famous freshwater habitats हैं. यहाँ हम 3 habitat के बारे में देखेंगे. वो कौन कौन से हैं? पहला है एवरग्लेड्स वेटलैंड. ये नाम है वेटलैंड का और कहाँ प्रेजेंट है? नॉर्थ अमेरिका में. और ये रहा उसका लोकेशन जहाँ रेड डॉट है और यहाँ लिखा गया है एवरग्लेड्स. So this is one of the largest freshwater habitats in the world. और इसका एरिया कितना है? 1.5 million acre woodlands found in Florida, USA. Then second one is your Lake Baikal, freshwater Lake Baikal present in Russia. If you look at the map, see we are here in India, then here it is Russia, and in Russia at this place we can see freshwater lake, Lake Baikal. Then we have Amazon River, which crosses through 3 different countries, Brazil, Peru, and Ecuador. And it covers a length of 6,400 kilometers and flows into the Atlantic Ocean. These are some of the 3 famous freshwater habitats. Then what you need to do here is you have to read this news. It is about the shrinking or reducing freshwater habitat area in India. And then when you are doing your homework, जब आप homework करेंगे, तो ये जैसे न्यूज़ मैंने आपके लिए कलेक्ट किया, ये न्यूज़ मैंने लिया है हिंदुस्तान टाइम्स से, 2020 में ये पब्लिश हुआ था. आप इसी तरह का न्यूज़ सर्च करेंगे अमेज़न रिवर के ऊपर कि कैसे अमेज़न रिवर में जो इकोसिस्टम है, एक्वेटिक हैबिटेट है, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है. फिर आप क्या करेंगे? लेक बाइकल कहाँ पर है ये लिखेंगे. वेयर इज लेक बाइकल सिचुएटेड, और इज इट अ फ्रेश वाटर और अ सॉल्ट वाटर लेक. Then next is you have to draw the diagram of a pond showing emergent plants, submerged plants, and floating plants. And then what is the need for learning about freshwater habitat? This is what you have to do. And thank you for your attention. I hope you find this video lesson interesting.